Okay, so today's our topic is precision and accuracy. अभी जो word हैं precision और accuracy, these are regarded as synonyms in our day-to-day language. But when it comes to physics, when it comes to measurements, these are two different things. Precision is something else, and accuracy is something else. So let's see what are these things. सो जो प्रिसियन है आपकी, इट इज कनेक्टेड विद स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो उसका लीस्ट काउंट होता है, इससे इसका रिलेशनशिप होता है प्रिसियन का। जितना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट लेस होगा, उतनी ज़्यादा मेजरमेंट प्रिसाइज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीटर रूल से किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेते हैं, लेट्स सपोज कुछ छोटी सी लाइन है, उसकी रीडिंग आती है आपकी 2.4 सेंटीमीटर्स। अब सेम ऑब्जेक्ट की आप मेजरमेंट लें यूजिंग वर्नियर कैलिपर से, तो उसकी आएगी लेट्स सपोज 2.42 centimeter because its least count is 0.01 centimeter, so it can measure up to 0.01 centimeter। तो इसका यहाँ पे 2.4 के आगे भी वो आपको बताएगा कि 2.4 कितना है, 2.40 है, 2.41 है, 2.38 है, कितना है। तो जो आपकी वर्नियर कैलिपर से जो मेजरमेंट आएगी, इट विल बी मोर प्रिसाइज, इट विल बी मोर प्रिसाइज। तो लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जितना लेस होगा, उतनी ज्यादा उसकी प्रिसिजन हाई होगी। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर हम बात करें, तो बिकॉज वी नो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस लीस्ट काउंट, सो हम इसको इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं कि द लेस द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, द मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट इज। Now let's see these two things. Measurements by meter rod, key 2.5 centimeters, then 2.6 centimeter, again 2.5 centimeter and 2.6 centimeters. Whereas measurements by vernier calipers जो हैं ये हैं 2.54 centimeter, 2.55 centimeter, 2.56 और 2.5 centimeter। अब मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सी रीडिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं। In which case the measurements are closer together, in case of the measurements by meter rod or the measurements by vernier calipers, closer to one another। सर ऊपर वाला सबसे क्लोजेस्ट है। ऊपर वाला क्लोजेस्ट है, चलें चेक करके देखते हैं। तो इसको चेक करने का मेथड ये है कि यहाँ पे जो लोएस्ट रीडिंग है दैट इज 2.5 और हाईएस्ट रीडिंग है 2.6। ठीक है, तो डिफरेंस जी सर। बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट कितना हुआ? सर 0. नहीं, तो 1. 2.6 माइनस 2.5, तो 0.1 सेंटीमीटर का डिफरेंस 5. हुआ। इसके अंदर कितना डिफरेंस हुआ? इसके अंदर लोएस्ट है 2.54 और हाईएस्ट कितना है 2.56। सो द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट इज 2.56 minus 2.54, it will be 0.02 centimeter। So the measurements by vernier calipers are closer together। इसमें जो maximum difference आ रहा है वो 0.02 सेंटीमीटर का, whereas in case of meter rule the maximum difference is of 0.21 centimeter। So it means that the measurements by vernier calipers have smaller difference, they are closer together, or in other words their range is small। ये रेंज होती है ना, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, उनकी रेंज है जब हमने फाइंड की है, इसको आप रेंज भी कह सकते हैं। तो रेंज in case of measurements using vernier caliper is less, और precise readings भी कौन सी हैं? वर्नियर कैलिपर्स की। सो यू कैन से कि precision of a measurement refers to how close the repeated measurements are to one another। जितनी उनकी रेंज लेस होगी मेजरमेंट्स की, रिपीटेड मेजरमेंट्स की, उतनी ज्यादा आपकी रीडिंग प्रिसाइज होगी। राइट, ये जी सर, कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी? ओके। अब आ गया।
अच्छा, ये अगेन हमने डिस्कस कर लिया है कि हाई प्रिसिजन मींस दैट मेजरमेंट्स आर क्लोजर टुगेदर। ये तो ऊपर हमने प्रिसिजन की डेफिनेशन की थी कि प्रिसिजन को हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रिसिजन? इफ वी से दैट these measurements are very precise, their precision is very high, so it means that the measurements are closer to one another। अगर हम उनकी रेंज फाइंड करें तो वो बहुत लेस होगी और स्मॉल रेंज होगी। एंड वी कैन से दैट रीडिंग्स आर स्कैटर्ड क्लोज टू एवरेज वैल्यू। इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। ऊपर वाली एग्जांपल लेते हैं। 2 पॉइंट, अगर हम मीटर रूल की मेजरमेंट्स लें, उनकी एवरेज अगर हम फाइंड करें तो एवरेज ऊपर की थी 2.55, 2.6, 2.5 एंड 2.6। तो इन सबको ऐड आप करें और उसके बाद 4 से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट 2.55 सेंटीमीटर। ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप डिफरेंट वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड आउट करें, एक डिफरेंस आपका निकलेगा 2.6 माइनस 2.55, देन 2.5 माइनस 2.55, 2 पॉइंट, ये दो वैल्यूज ही है ना, तो -0.5, सॉरी +0.5 और -0.5, ये 0.5 का डिफरेंस है with the average value, whereas in case of vernier calipers आपकी एवरेज वैल्यू क्या निकलती है? डू यू हैव कैलकुलेटर? So what is the average value of these? 2.54, 2.55, 2.56 and 2.55. I think it will be 2.55 centimeter because दो 2.55 की हैं। 2.55। 2.55 सेंटीमीटर। अच्छा, अब डिफरेंसेस अगर आप निकालें, एक रीडिंग है आपकी 2.55 माइनस 2.55, सेकेंड रीडिंग आपकी थी 2.54 और 2.56। 2.54 माइनस 2.55 और 2.56 माइनस 2.55। तो डिफरेंस अगर आप देखें, इसमें जीरो का है, इसके अंदर -0.01 और इसके अंदर +0.01। ना दोनों को कंपैरिजन करें, स्कैटर्ड दोनों ही हैं क्लोज टू एवरेज वैल्यू, लेकिन ज्यादा कौन सा क्लोज है? इसके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या इसका आ रहा है 0.5 का, और -0.5 का डिफरेंस आ रहा है। इसके अंदर कितने का आ जी रहा है? सर। 0.01 का। सो इन हाई प्रिसिजन जो कि बर्नियर कैलिपर्स के अंदर है, दे आर स्कैटर्ड क्लोज टू द एवरेज वैल्यू। और ये प्रिसिजन का आप जो डिसाइड करेंगे, ये आप तभी डिसाइड कर सकते हैं व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स। आप डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि उसकी हाई प्रिसिजन है, उसकी लो प्रिसिजन है। वो आप कंपैरिजन करेंगे, ओनली देन यू कैन से दैट ओके दिस इंस्ट्रूमेंट हैज हाई प्रिसिजन एज कंपेयर टू दैट, दिस मेजरमेंट हैज हाई प्रिसिजन एज कंपेयर टू दैट। सिर्फ अगर आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी तो उस पर आप ये नहीं कह सकते कि इट इज ऑफ हाई प्रिसिजन और इट इज ऑफ लो प्रिसिजन। ठीक है। Okay, now what is accuracy? Accuracy of a measurement refers to how close a measurement is to its actual or true value. Precision में क्या था? They were closer to each other, closer to their average value. यहाँ पे क्या है? They are closer to actual और true value। ये डिफरेंस जो है ये याद रखने हैं। They are closer to each other or closer to average value in precision, and they are closer to actual or true value in accuracy. अब let's take this example.
अब हमारे पास ये एक मैस था 100 ग्राम का, इसका ट्रू वेट है, ट्रू मैस है, और इसको जब हमने एक वेइंग स्केल के ऊपर रखा तो इट इज शोइंग 100 ग्राम्स, वेयर एज अदर वन इज 98.89। तो अब ये मेजरमेंट है 100 ग्राम वाली, इट मैचेस विद द ट्रू वैल्यू, सो इट इज एन एक्यूरेट मेजरमेंट। वेयर एज जो ये वाली मेजरमेंट है, इट is not matching and it is far away from actual value, so this measurement is inaccurate। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने एक ठीक चीज है। स्टडी की थी कि जो प्रिसिजन है, इट इज रिलेटेड टू द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। द लेस द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट, द मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट इज। अगर हम अनसर्टेनिटी की टर्म्स में ही एक्यूरेसी को देखें तो इट इज रिलेटेड टू द फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। The less the percentage uncertainty, the more accurate the measurement is. Precision is related to absolute uncertainty, whereas accuracy is related to percentage uncertainty, or you can say fractional uncertainty। ये कैसे होता है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने देखनी है कि देर आर टू रीडिंग्स, हमने डिसाइड करना है कि विच वन इज मोर एक्यूरेट। तो एक हमने रीडिंग ली है 25.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीटर रूल, एंड अनदर वन इज 0.45 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्नियर कैलिपर्स। नाउ हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं है, बट वी कैन डिसाइड विच वन इज मोर एक्यूरेट बेस्ड अपॉन this fact that the less the percentage uncertainty, the more accurate the measurement is। in other words, हमने क्या करना है, हमने इन दोनों केसेस के अंदर इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। so in order ठीक to है। find percentage uncertainty, you first need absolute uncertainty। so absolute uncertainty in case of meter rule is, what is the absolute uncertainty सर in ट्वेंटी case of फाइव meter? पॉइंट फाइव सेंटीमीटर Plus minus 0.1 centimeter, it is equal to the least count of the ओ measuring अच्छा। instrument। ठीक राइट, है। अच्छा अच्छा, measured वैल्यू यहाँ पे क्या है, 25.5। तो आपकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, that is equal to absolute uncertainty divided by measured value। so absolute uncertainty आपकी है 0.1, measured value क्या है 25.5, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए इंटू 100%, प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें, तो जीरो 0.39। 0.39%। जी सर। ओके, सो इट इज 0.39%। Whereas in other case, in case of vernier calipers, our absolute uncertainty is 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 centimeter, and our percentage uncertainty will be plus minus 0.01 divided by measured value. Measured value in this case is 0.45, and we will multiply it with 100% to get the percentage। and if you solve this, what is the value? सर ये है 2.22। 2.2%। so there is more percentage uncertainty in case of 0.45 centimeter measurement using vernier calipers। so which measurement is more precise in these two readings? सर वर्नियर कैलिपर्स। So yes, vernier caliper is more precise, whereas which one is more accurate? मीटर रूल। Meter rule. Okay, meter rule is not
accurate, right? It is Yes. the measurement, and it is not necessary that all measurements using meter rule are accurate than the measurements using vernier calipers. ये सिर्फ इस केस के अंदर, इस measurement के केस में ऐसा हुआ है, because it depends upon the absolute uncertainty, the precision, as well as द मेजरमेंट। तो ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। आप ये नहीं कह सकते कि मीटर रूल गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग्स। इट डिपेंड्स अपॉन द रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग। आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से फाइंड करना पड़ेगा। हाउएवर यू कैन से दैट वर्नियर कैलिपर्स इज more precise than meter rule because it has less absolute uncertainty, its least count is less, right? So precision आपके Yes. measuring instrument की होती है, रीडिंग की भी होती है, मेजरमेंट की भी होती है, लेकिन आप उसको ये भी कह सकते हैं कि प्रिसिजन इज रिलेटेड टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट, बट एक्यूरेसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू द measurement, not with the instrument, right? ठीक है। So, this is an analogy of precision and accuracy. इसको मैं थोड़ा स्मॉल करता हूँ। Okay, so in case of A, our accurate value, our target is in the center, right? So in case of A, all arrows are hitting the center, the true value, जी our सर। target. So this one is accurate. And all जी सर। three of them are hitting at the same place. So it is precise as well. Okay? They are closer to the target, they are closer to the actual value, and they are closer to each other as well. So these are more accurate and these are precise as well. In case of B, they are far away from the target. So this is not an accurate result. But all of them are pointing toward the same point. They are closer to each other. It means it is precise. It is precise hit. Whereas in case of C, they are far away from each other. They are not closer together. It means they are not precisely hit, and they are also far away from the target, from the true value. So they are also not accurate. So in case of A, we have good accuracy and good precision. In case of B, we have poor accuracy but good precision. Whereas in case of C, poor accuracy and poor precision. ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम ग्राफ्स के ऊपर देखते हैं कि by looking at the graphs, how can we decide that our reading is precise or not so precise and whether it is accurate or not accurate. So in order to do so, look at this graph. Now on x-axis we have the reading and on y-axis we have number of readings. Means हमारी एक like for example अगर मैं आपको example दूं, let's suppose we have a reading of 25 centimeters और ये आई 3 times, then 26 सेंटीमीटर ये आई आपकी 10 टाइम्स, और फिर 27 सेंटीमीटर ये आई आपकी 20 टाइम्स एंड सो ऑन। ये आप करते जाएं तो ये जो टाइम्स हैं दीज आर ऑन वाई एक्सिस एंड द मेजरमेंट द रीडिंग इज ऑन एक्स एक्सिस। सो दिस टी represents the true value. Now if you take the average will be क्लोजर टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडिंग्स। जो सी रीडिंग सबसे ज्यादा दफा आ रही है वहां पे आपकी एवरेज होगी। सो इट विल बी इन द सेंटर ऑफ द कर्व यहाँ पे। तो यहाँ से अगर आप इसकी एवरेज निकालें तो एवरेज इज कोइंसाइडिंग विद द ट्रू वैल्यू। इट मीन्स के दीज आर एक्यूरेट बिकॉज द मेजरमेंट आर क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू एंड इट इज प्रिसाइज एज वेल बिकॉज आप अगर कर्व को देखें तो इट हैज वेरी नैरो रीजन। सो मीन्स दे आर क्लोजर टू वन अनदर, दे आर क्लोजर टू वन अनदर, precise, and their average value coincides with the true value, so it is accurate. अब दूसरा ग्राफ अगर हम देखें, let's see this graph. Now
in this graph, your average value will be here. Again, it is coinciding with the true value. Average value will be equal to the true value, so it is accurate. But यहाँ पे जो region है number of readings का, ये काफी wide है. Means the readings are not closer to one another. Wide scattering हुई हुई है. So that is why these readings are not precise. Or another example, in this case, they are closer to one another. You can see that almost same graph, very narrow region. So it is precise, but it is not accurate because now the average value is average value is somewhere here. True value is this one, and average value is this one. So this measurement is not accurate. Whereas the fourth one, now in this case, they are widely separate, they are not closer to each other, so they are imprecise. Whereas average value, again, it is somewhere here, which is far away from the true value. It is not closer to the true value, so that is why it is also not accurate. Imprecise and inaccurate results. सर जी सही, जो अभी आपने ग्राफ शो किया है और जो जी सेकंड जी वाला, ये दोनों शेप सेम नहीं है? दिस वन उससे ऊपर दिस वन ये, जी सर, सेकंड और ये दोनों फोर्थ की सेकंड की और फोर्थ की शेप सही है, तो यानी कि सेम है. अरे फर्क कैसे बताएंगे ये एक एक्यूरेट और एक्यूरेट नहीं है? जी, आपने एक्यूरेट देखने के लिए ये देखना है कि जो आपकी एवरेज वैल्यू है, वेदर इट इज नियर टू द ट्रू वैल्यू और नॉट. ये जो टी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टी टी रिप्रेजेंट्स द ट्रू वैल्यू. सो जी यहाँ पे आपकी एवरेज आपने निकाली, सो इट कोइंसाइड्स विद द ट्रू वैल्यू. मींस जो एवरेज वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू. So that ठीक है। is why it is accurate. Whereas in the fourth one, आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है, ट्रू वैल्यू इधर है. मीन्स जो एवरेज मेड वैल्यू है, इट इज नॉट क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एक्यूरेट. ठीक है। शेप ऑफ द कर्व से जो है ना आपको पता चल रहा है सिर्फ वेदर इट इज प्रिसाइज और नॉट. Okay, now let's see some effect of random and systematic errors on precision and accuracy. So let's suppose some thing has a true value of 5 centimeters. Its actual value, actual length is 5 centimeters. And due to the random errors, the measurements are 4.9 centimeter and 5.1 centimeter. We stated that due to random errors, the measurements are sometimes greater than the actual value and sometimes they are less than the actual value. So there are some random errors. Or one time the readings were was 4.9 centimeter, and the second time the reading was 5.1 centimeter. Now, due to some reason, random error increased, and when the random error increased, then the measurements became 4.8 centimeter and 5.2 centimeter. Now we have to see what has the effect on this increase in random error on precision and accuracy. So what do you think? Parallax error, Ji? the parallax error। No, what is the effect? ये जो random error increase हुई है, what is the effect on precision and what is the effect on accuracy? पहले precision का बताएं. What is the effect on precision? तो रिड्यूस हो या Precision reduce हो गई है because now the measurements are far away from each other. पहले they were closer together, now they are far away from each other as compared to the previous one. So precision is decreased. And what about accuracy? इंक्रीज।
ओके, एक्यूरेसी के लिए हम क्या देख रहे थे कि जो एवरेज मेजर्ड वैल्यू है दैट इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू और नॉट. सो इन दिस केस एवरेज इज 5 centimeter, 5. and in this case again average value is 5.0 centimeter. So average is same and it is equal to the true value. So there will be no effect on accuracy, right? ठीक So है. if you increase the random error, then measurement will become less precise. Second thing, true value is again 5 centimeter. एंड मेजरमेंट्स जो थी, हमने जो मेजरमेंट्स ली सो दे वर 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर ड्यू टू सम systematic error, and you can say that there was zero error and it was not corrected. So the readings were 5.2 centimeter and 5.2 centimeters. There was some systematic error, there is no random error in this case. अब due to some reason systematic error increase हो गई. If systematic error increase हो गई, so now the measurements are 5.5 centimeter and 5.5 centimeter. What is the effect of increase in systematic error on precision? पहले precision का बताएं. सर इंक्रीज हो जाए. Precision increase हो गया. अच्छा, precision is related to, precision refers to how close the measurements are to one another. यहाँ पे दो measurements थी 5.2 centimeter and 5.2 centimeter. The difference is 0. 0.3. ठीक है. नहीं, ये 5.2 और 5.2 में देखे ना, वी हैव टू सी वेदर द अच्छा हाँ. मेजरमेंट्स आर क्लोजर टू वन अनदर. इस केस में हमने जीरो दो है. रीडिंग ली, दोनों एक ही रीडिंग थी. इसके अंदर भी तो ठीक है. डिफरेंस क्या था, 0 था. 5.2 माइनस 5.2. whereas in second case again the difference between the readings is 0. both cases ठीक है. में जो आपकी रीडिंग्स थी दे आर क्लोजर टू इच अदर, सो नो इफेक्ट ऑन प्रिसीजन इन दिस केस. वेयर एज एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजरमेंट्स आर टू द ट्रू वैल्यू. अब यहाँ पे जो आपकी एवरेज थी वो थी 5.2 सेंटीमीटर और उसका डिफरेंस फ्रॉम द ट्रू वैल्यू क्या था, 5.2 minus 5, जीरो. 0.2 0.2 centimeters. सेंटीमीटर. Now, in this case, our average value is 5.5 centimeter, and the difference from the true value is 5.5 minus true value, which is 5 centimeter, so 0.5 centimeter. The difference from the true value is increased. It means that measurements are less accurate now. So whenever there is increase in magnitude of systematic error, measurement will become less accurate. Random error increase होगी तो precision decrease होगी. Systematic error increase होगी तो accuracy decrease होगी. ठीक है जी. सो अब अगर आपको ओके मैं सर. इन शॉर्ट थोड़ा सा समराइज कर दूं कि जो आपकी प्रिसीजन है, it is related to absolute uncertainty, and it is related to random error. रिलेशनशिप मैं अभी यहाँ पे नहीं लिख रहा कि वो आप हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट विल इंक्रीज एंड व्हाट विल डिक्रीज. मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि उसका रिलेशनशिप होता किस चीज से है. सो एक्यूरेसी इज रिलेटेड टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी, and it is related to systematic error. मीन सिस्टमैटिक एरर अगर चेंज होगी तो एक्यूरेसी के ऊपर इफेक्ट होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी चेंज होगी तो एक्यूरेसी के ऊपर इफेक्ट होगा, प्रिसिजन के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा. Similarly, if there is change in absolute uncertainty or there is some change in random error, it will affect precision, not the accuracy. ठीक है.